संडे लाइव करने आए हैं जिसमें हम आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। एक अच्छी खबर ये है कि हमने अभी रिसेंटली जस्ट 10 मिलियन व्यूज़ क्यूमुलेटिव हमने गार्नर किए हैं। हमने क्रॉस किया है 1 करोड़ व्यूज़ का मार्क। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड एक छोटा सा लाइव सेशन करने आया हूँ। जो भी लोग देख रहे हैं कि इंटरेक्शन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी ओकेजन है जिसमें हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड होपफुली जो इंटरेक्शन होगा लोगों से, उसमें आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, एप्रीहेंशंस हैं, उसको हम डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जो भी आपके क्वेरीज हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जी। चंद्रभूषण चौहान जी, हाय, हाउ आर यू। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं हो सकता है बिज़ी हूँ और आई कैन नॉट कम ऑनलाइन। इंटरेक्शन ऐसे व्हाट्सएप पे भी नहीं हो पाता है। तो ये मैंने रिसेंटली शुरू किया है लाइव सेशंस, ताकि मैं आप लोगों के कोई भी क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस हो, उनको, उनके क्वेश्चंस को जो है आंसर कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे 630 प्लस वीडियोस हैं, तो सारे कमेंट्स को देखना इतना पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जैसे कि जो मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हैं पर्सनली, स्पेशली अराउंड ओरल हेल्थ, जिसमें अभी मेरे को एक रिसेंट पैटर्न दिख रहा है। जब लोगों के गाल कट जाते हैं कुछ खाते वक्त, और उस पर वहाँ पे एक लाल कलर का दाना हो जाता है, जिसको हम एक हीमोटोमा या ट्रोमेटिक हीमोटोमा बोलते हैं। एंड लोग बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज जब वो उनके साथ होती है वो वाकया, तो या तो वो सो रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता, और अगले दिन सुबह मुंह में उठते हैं तो उनको एक हल्की सी गिल्टी दिखती है लाल कलर की, जो थोड़े टाइम बाद काली भी हो जाती है, और उनको लगता है ये कुछ आड़ा तिरछा तो नहीं है, बट ये एक जस्ट एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि वहाँ पे खून भर जाता है और वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। हाँ, अभी एक डाउट आया है, माई माउथ ओपन लेस ओनली 2 फिंगर्स, कैन दिस बी क्योर्ड। सर, माउथ ओपनिंग बढ़ सकती है, डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपका माउथ ओपनिंग का प्रॉब्लम है। और उसके लिए मेडिसिन्स भी होते हैं, इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, लेज़र फाइब्रोटमी भी होती है, सर्जरीज भी होती हैं। तो माउथ ओपनिंग के साथ आपको बर्निंग सेंसेशन की भी प्रॉब्लम है, तो ये लिखिए कमेंट में, तो मैं बताता हूँ आगे। एंड कमिंग बैक टू जो ट्रोमेटिक हीमोटोमा हो जाता है वहाँ पे, उसमें छोटा सा एक दाना होता है, जिसमें काफ़ी हद तक लोगों को दर्द नहीं होता। एंड लेकिन लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो चंद्रभूषण जी का आया है कि नॉट मच, ठीक है। तो एक काम करिए, इसमें मेरे को बस ये चीज़ नहीं पता कि मैं अपना क्या कहते हैं, हाउ डू आई राइट माई नंबर डाउन। अगर मैं फिर से बोल देता हूँ, 9008417531, 9008417531, 9008। अब आई थिंक इसमें तो ये उल्टा आ रहा होगा, राइट। तो बट माई नंबर इज़ दैट 9008417531। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए मैं रिप्लाई करूंगा थोड़े दिन बाद, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। कॉल की फ़ीस लगती है, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, हर किसी से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो कंसल्टेशन होती है, कॉल का मतलब होता है टेली कंसल्ट, क्योंकि मैं आपको अपना समय दे रहा हूँ। मैं अपने क्लिनिक से, पेशेंट से, अपनी फैमिली से समय निकाल के आपकी कॉल को आंसर करना चाहता हूँ। तो ये भी मैं आपको सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट कॉल जनरली नहीं उठाता हूँ। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। व्हाट्सएप पे मैसेज डालने का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई मैं अपने अनुसार, जब भी मुझे समय अनुमति देगा, तब मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको परामर्श करना है, तो परामर्श और कॉल पे बात करनी है, तो डेफिनेटली आपको जो है हम व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, उसके बाद हम बताएंगे आगे की प्रक्रिया क्या होती है। क्योंकि कॉल करने का मतलब है मैं आपको अपना समय दे रहा हूँ।
एंड ये चीज़ सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ भी एड्रेस करना चाहता हूँ मैं कि अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं बिज़ी हो सकता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ या यूट्यूब से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने मैसेज पढ़ लिया है और उसी टाइम पे मुझे या तो कोई कॉल आ गई है या मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है या कोई पेशेंट आ गया मेरे पास, तो मैं उसको रीड करके छोड़ देता हूँ। तो लोगों को लगता है कि मैंने रीड कर लिया, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके मैसेजेस रीड करके मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं रिप्लाई तभी करूँगा जब मुझे टाइम मिल पाएगा उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसीलिए मैंने ये लाइव सेशन, ये लाइव सीरीज शुरू करी है ताकि मैं जो लोग मेरे से कमेंट में कुछ पूछना चाहते थे, वो कमेंट या तो चला गया बहुत सारे सीरीज के नीचे, कमेंट्स के नीचे, या जो व्हाट्सएप पे मैं मैसेज हो सकता है कभी ना गया हो, या लोगों से व्हाट्सएप पे बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा नंबर वो सेव कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में आपको अपना कॉन्टैक्ट्स रिफ्रेश करने होते हैं। तो बहुत बार मुझे लोग ये कहते हैं कि सर हमने आपका नंबर सेव कर लिया पर व्हाट्सएप पे आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको अपने कॉन्टैक्ट्स जाके रिफ्रेश करने होंगे, फिर अपना मैसेज डालना होगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, जब भी आप मुझे व्हाट्सएप भेजें तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपना थोड़ा-सा परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका स्थान क्या है, उसके बाद आप समस्या लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, हालाँकि मेरे को बहुत लोग सीधा डायरेक्टली फ़ोटो भेज देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप मुझे भेज ही रहे हैं फ़ोटो, उससे पहले थोड़ा तथ्य बनाइए, अपना नाम बताइए, अपना स्थान बताइए, फिर समस्या लिखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि फ़ोटो आप भेजना चाहते हैं, तो पहले पूछिए कि सर मैं फ़ोटो भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता। आप भेजिए फ़ोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे मैसेज कर रहे हैं जिसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आपको इतनी स्वतंत्रता मुझे देनी होगी कि, और इतनी छूट मुझे देनी होगी, जब मैं फ्री होऊँगा तब मैं उस पे रिप्लाई करूँगा। अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ समझिए कि आप डॉक्टर को समय दे रहे हैं। डॉक्टर से समय लेने का मतलब है वो टेली कंसल्टेशन होगी। क्योंकि यही चीज़ जब आप एक फिजिशियन एमडी के पास जाते हैं, वो भी बात ही करते हैं, थोड़ा-सा एग्ज़ामिनेशन करते होंगे, है ना? तो मुझे ये बहुत लोग ये भी बोलते हैं, सर बात करने के पैसे क्यों होते हैं? आप सेम चीज़, जो डॉक्टर आपके एमडी वाले, फिजिशियन वाले होते हैं, आप भी उनसे जाके बात करते हैं, बट आप उनको शुल्क देते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कोई मनी माइंडेड हूँ, बट मेरा समय बहुत कीमती है, ये चीज़ समझिए। और अगर मैं आपको अपना समय दे रहा हूँ कि एक तरीके से, मान लीजिए मुझे दिन के 80 कॉल आते हैं और मुझे प्रति कॉल, अगर मैं एक दिन मैंने बना लिया कि मैं 5 मिनट प्रति कॉल लगाऊंगा। अब 80 गुणा 5, 400 मिनट। 400 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं कितना हो गया? 360 ही मान लीजिए, 6 घंटे गए मेरे। तो उस एंगल से मैं ये बोल रहा हूँ कि समय अपने रियल, जो अपने हमारे जो इन क्लिनिक पेशेंट्स हैं उनको भी देना है और बाकी सब को भी करना है। सर OSMF माउथ ओपनिंग इज 45 इज मोर देन नॉर्मल, इट इज वेरी गुड माउथ ओपनिंग, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। 45 mm माउथ ओपनिंग इज अ लॉट, इतने तो नॉर्मल लोगों की नहीं होती। Autism is, although it is not a part of what we are talking about here, but autism can be managed. ये चीज़ जो आपने पूछी है, autism, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर, I'll be very honest कि मेरे इस विषय के बारे में मेरी नॉलेज और स्कोप लिमिटेड है, बिकॉज मैं डेंटिस्ट हूँ। बट जितना मुझे पता है कि पहले 3 साल तक आप ये गेस नहीं कर पाते हैं या इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि ऑटिज्म है कि नहीं है बच्चे को, जो मुझे पता चला है। एंड दूसरी चीज़ है, ऑटिज्म मैनेज किया जा सकता है, किस लेवल पे बच्चा स्पेक्ट्रम पे है वो फर्क पड़ता है। तो it can be managed with the right places to go for the therapy. I won't call it as cured, because autism is not a disease per se, it is a disorder, it is a genetic disorder. In OSMF the mouth joint is yellowish, अंदर से आप कह रहे हैं it looks yellowish, can you please specify this? And feels like chilies, matlab you're having burning sensation. Just give me a yes or no if you're talking about burning sensation and paleness of the mouth from the inside. हसन तबिश की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे बात कर रहा हूँ।
तो मुझे ये बताइए, जो माउथ जॉइंट येलोइश अंदर से लग रहा है देखने में, कलर में, and feel like chili as in like it is burning. If that is the case, then you can comment yes, it is that only. Yeah, if it is burning, then definitely you need to go for medications for OSMF, and that can be managed. Burning sensation can be managed. डिपेंड करता है कि बर्निंग सेंसेशन कितनी होती है, खाना खाने पे होती है, तीखा खाने पे होती है, डिपेंड्स अपॉन दैट. What treatment can be done for this? जो burning sensation के लिए हम medications देते हैं. See, OSMF depends upon the degree of OSMF. We start off with medications and physiotherapy. We can do intralesional injections. That means जहाँ आपके bands जहाँ आपके form हो गए वहाँ पे injections देते हैं. Placentrix ये hyaluronidase के injections देते हैं. And followed by other more invasive therapies such as laser fibrotomy and physiotherapy, and in very severe cases actual proper surgery, nasolabial flap, buccal fat pad operation, which requires a hospital visit. तो डिपेंड करता है आपकी तीव्रता कितनी है, एंड OSMF के लिए डेफिनेटली इट कैन बी मैनेज्ड. आई हैव अ स्मॉल बॉयल on the side of my tongue. It is not healing. OP यादव जी मेरा नंबर लिख लीजिए 9008417531, 9008417531. एंड आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सेव करके डॉक्टर रुद्रा करके जो है मैसेज डालिए, फिर आप हम उसके बारे में आगे बात कर सकते हैं. Sir, white lines inside cheeks, no pain, but from a very long time. That is known as Miss Aditi. It is known as linea alba peccalis, which is absolutely normal. It is not painless. It is not something to be worried about. Hassan Tabishji, yes, the mouth opens completely. That's good. Burning sensation ke liye we can manage that very easily with medications. You can DM me on my WhatsApp number 9008 417531. So, any other questions and queries I can answer? Okay, my number is 9008417531. I'll try to write it somewhere if I can. One second, let me try. I'll just try and see if I can do it. Let me see. One second. So this is my phone number, if you can see. One second. This is my I'm not able to flash it though. Yeah, this is my phone number in case you want to message me. 9008417531. Because I'm using a front camera, that's why I have to write it here. I hope if I can type it somewhere. One second, let me see this. Yeah, I'll do one thing here.
I've just added my number here for a poll purpose. एक second. Anyway, 9008417531. Okay, there are some questions. Sir, any treatment for those lines? No. There's no treatment required for linea alba and they don't need to go. Let them be. It's completely fine. Hello, Shashraji. Okay. I feel pressure and ache lingers in the right upper teeth after lower molar touches. Already 5 sessions of RCT done. Okay. You'll have to get this checked, evaluated properly. I'm suffering from a cheek bite, sir, and the doctor has suggested surgery. Can you specify what surgery is it? What surgery has the doctor told for your cheek bite? Or is it for gum receding? Where is the gum receding, if I may ask? Lower front gums. Have you gotten an X-ray done? Get an OPG X-ray done. It's called OPG, full mouth X-ray done, and send it to me if you can. If you can, send me the why does OSMF happen? Because of tobacco history. If you consume tobacco, gutka, pan masala products, then it is an inflammatory reaction towards the irritation of the tobacco. Dentist informed me if it's a cracked teeth, but does the ache linger after 5 sessions of RCT? I'll tell you what I'm talking about. 1 second. If it's a cracked tooth, then you'll have to get it checked out because cracked teeth prognosis is not that good. You have to probably get it either extracted or something else. So if you have an X-ray, or you can ask the X-ray from the dentist to send it to you, and you can send it to me. Okay. My number is again 9008417531. I'm gonna try and put my number somewhere. 1 second. Yeah. Let me try and do this because I won't be able to see. 1 second. If I can write a comment somewhere. I'll ask my assistant to
write a comment and I'll pin it. That would be better for my this thing. Give me 1 second. Okay, so let's get back to this. Can first or okay, what do you mean by I have to ask this to all of the people and I have to tell this to a lot of people that OSMF is never completely reversible. Correct का मतलब क्या होता है? What do you mean by correct? What is your expectation of the treatment being correct or curing? My braces, brushes लिखा है अपने, braces होना चाहिए. My braces is already put in 8 months and how many months required to complete treatment? Okay, now one thing, before even starting your braces journey, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा that you have to make sure that you have an expectation setting with the orthodontist in question कि कितना टाइम लगना चाहिए. 1.5 साल से 2 साल, 1.5 years to 2 years is generally a basic time that is required for braces to be finished, the treatment to be finished, and retainers are definitely required, ideally for a lifetime, that you have to wear the retainers all the time. How many days it takes for OSMF to heal? My question again to Deepak ji is, what do you mean by healing? What do you mean by healing? Your symptoms to go down, burning sensation to go down? Is it your mouth opening to improve? What do you mean by healing? Because OSMF never completely reverses or completely heals. It is all about OSMF. In OSMF, it is always that if your burning sensation is taken care of, your mouth opening becomes adequate, even if you have bands, that is the time we consider OSMF to be healed. So healing means that you are able to open your mouth to eat the food and your burning stops. That takes from 3 to 6 months minimum. If and if only you are taking all the instructions of the dentist and the medications, everything very seriously and diligently. Please understand that sometimes patients have no problem in terms of eating normal food, but they cannot eat spicy food, so you'll have to refrain from having spicy food. That is also one of the cases. Orthodontic treatment, how many money spent, as in cost? That depends from dentist to dentist, place to place. You go to a college, it will be very less. You go to a premium dentist, it will be it will be too much. Depends upon what kind of braces you want, what is your case, what is your financial capability. If you've already spent money on the braces, before even thinking of getting the braces done, make sure you talk everything to your dentist, including money, time, relapse, retention, everything. Because what happens is, when you think, this is what I'll tell you what patient psychology is all about. आपने पैसे दे दिए और आपके हिसाब से वो पैसे ज़्यादा थे, I don't know जो भी थे, and results either are coming very slow or you're not able to see them because you are living through it every day. You feel that your money has gone to waste. So that's why before getting the braces done, speak to them. What would be the expected result? My problem is this. How much would this problem change? How much time would this problem change? And how much money is this going to take in the full complete treatment? So you have to understand that. बिकॉज ये चीज़ मेरे को बहुत लोगों ने बोली भी है दैट एंड स्पेशली on my braces वाले episode, a lot of people have commented कि I got treated by my dentist, so much money, done this, that. You have to understand कि braces के पहले आपको definitely सारी बातें पता करनी पड़ेंगी. और अगर आपका डेंटिस्ट ये सब नहीं बता रहा है तो उससे मत करवाइए braces का ट्रीटमेंट.
Go to a dentist who is informing you of everything. Range starts from 30,000 to 2 lakh rupees. That's the exact range for braces, because it depends from where you're getting it done. My jaw got cut by a tooth and it has been 2 months and it is been healing slowly. The doctor says that there's no problem. Should I get a biopsy done? No. Only if the doctor has told you to get a biopsy done, you get the biopsy done. Otherwise, no. The only time a patient should get a biopsy done is when the doctor has told them to get the biopsy done. As simple as that. Any other questions that I can answer? हेलो 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 राम कश्यप जी, टेल मी, बताइए क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए सो आई कैन आंसर ऑल ऑफ देम. My profession, I'm a dentist. I'm a periodontist. I'm a gum surgeon, laser surgeon. So I am a periodontist. I deal with gum disease and its treatment, and I basically take care of the diseases of the gums. My clinic is in Delhi. I've been practicing for the past 6 years as my own practice, but I have about 15 years of experience, and my clinic is in Delhi. Now, also one request to all the people who are viewing me right now. A lot of you have not subscribed to our channel. Please try to subscribe to our channel and ring the bell icon so that you can get important updates. Sir, does the cracked teeth ache starts in the opposite tooth of the fracture? Also, does the swelling in the fracture tooth come? Yes, it is possible. Rajesh Kumar Sahuji, it is absolutely possible. Whatever you're telling me, it is very highly possible that you might be having something like this. All I would request you to do is try to get an X-ray, recent X-ray done that you have gotten done at the dentist. It's your right to ask for X-rays. Since you are still in discomfort, you have to make sure that you get maybe a second opinion from someone. Sir, I have a black mark on my cheek. Sometimes it burns. What should I do? Ram Kashyap ji, I want to ask, do you have any oral abusive habits such as tobacco? And second thing, do you have any stomach upset issues like acidity or bloating? रामचंद्र नायक जी ने बोला है, सर कैंडिडियासिस कैसे ठीक होना है, पूरा मैसेज लिखिए प्लीज, थोड़ा सा वेग हो रहा है. Prince Prajapati ji, you can take my phone number and DM me because I cannot handle one-on-one conversations because there are other people also under this thing. My number is 9008 417531. That is my phone number, 9008 417531. I will answer all your questions there. If you want to ask me about my doctor journey and everything, gum journey and everything, that is a very long conversation. I will not be able to tell it because I'm here to talk about oral health and oral health problems that you guys have, and you need to, we'll try to stay on this topic while in the live session. Any other questions, queries that I can answer? Okay, now if you consume tobacco, the first thing that I would tell you is stop consuming tobacco. Black mark is generally not a bad sign. Black mark is actually a sign of healing.
With medication, the burning can be cured and the black mark is normal that way. Yes, there is no problem, Mr. Ankit. If it in the biopsy it says varicose hyperplastic tissue without dysplasia, without malignancy, then all you need to do is that you need to be in constant touch with your doctor every 3 to 4 months. That means every 3 months you go and visit them for the next couple of years, and then you can go every 6 months. All right, Prince, you can take down my number and message me there, 9008 417531. So it says varicose hyperplasia, probably without dysplasia, without malignancy. That means you don't need to worry about it. There is no problem. And just go visit your doctor once in 3 months for the next couple of years. And try to visit your doctor every 6 months if possible. Thank you for your support, Ram Kashyap ji. Any other queries, questions, doubts, apprehensions I can answer? So जो भी क्वेरीज हैं, आपकी डाउट्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, तो उनको डेफिनेटली आंसर करिए. अभी जैसे कि लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी, या दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो कहते हैं कि लोग ब्लैक मार्क हो जाता है मुंह में, तो घबराने की बात है. अगर जलन नहीं है तो घबराने की बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट हैपेंस. ब्लैक मार्क जनरली तब आते हैं या तो आप टोबैको कंज्यूम करते हैं या आपके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है. That means you are having problems like acidity, bloating and everything else. So get yourself checked out with a doctor. Most of the times black marks in the mouth are generally harmless, so you don't need to worry about it. Any other questions, queries, doubts, apprehensions? Because I'm very thankful to all of you कि आप सब questions पूछ रहे हैं, which is good. And जितना आप questions पूछेंगे उतनी जितनी आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उतनी मेरी भी जो है जिज्ञासा बढ़ेगी और चीज़ें समझने की. और मैं आप लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो हमारी जर्नी रही है अभी तक 44,000 सब्सक्राइबर्स की, और अभी हमने रिसेंटली 10 मिलियन व्यूज़ यानी कि 1 करोड़ व्यूज़ क्यूमुलेटिवली क्रॉस किए हैं. इससे काफ़ी सीख मिली है मुझे, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों के माध्यम से. जब आप अपनी प्रॉब्लम्स वो करते हैं, बताते हैं, और उससे मुझे समझ में आता है ना सिर्फ आपके मौखिक त्वचा के बारे में, बट मौखिक त्वचा से जो चीज़ें होती हैं, मानसिकता से लेकर जो बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं. तो अब मुझे ये भी सीख मिली है अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कि पेशेंट को समझा के, काम डाउन करा के उनकी एंजाइटी कम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बीइंग अ डेंटिस्ट. क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भय फैलाते हैं. सो मुझे लगता है कि इट इज़ गुड. एक कमेंट आया है, सर आई हैव माउथ ओपनिंग OSMF बट नाउ माउथ ओपनिंग ऑलमोस्ट 40 mm. ग्रेट रिंकू जी, दैट्स गुड. बट आई हैव सम वाइट पैचेस इन चीक एंड टंग एंड आई हैव लॉट ऑफ यूज ऑफ antioxidants and multivitamins, but patches are not removed. What do I do? Excellent question. First of all, thank you for this question. अब मैं आपको सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, OSMF की एक स्टार्क रियलिटी क्या है, जो थोड़ा सा रियलिटी चेक सबके लिए होना चाहिए. जब हम बात करते हैं OSMF की, OSMF का ट्रीटमेंट यही होता है कि आपके माउथ ओपनिंग जो एंड पॉइंट होता है, जब हम OSMF का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एंड पॉइंट ये होता है कि आपकी मुंह की जलन खत्म हो जाए और आपका मुंह खुल जाए. योर माउथ ओपनिंग बिकम्स एडिक्वेट फॉर यू टू हैव फूड
and your oral mucosa, that is the skin of your mouth, is able to tolerate spicy food or just in general normal food. That means the burning sensation is gone. When it comes to white patches, the marble-like skin of the mouth, because of OSMF, that takes a lot of time to change, and almost we can say to the level कि let it be. अगर त्वचा में, जिसको हम देशी भाषा में बोलते हैं कि चांदी आ गई है, OSMF की वजह से चांदी आ गई है, तो चांदी नहीं जाएगी जब तक जलन ना हो और मुंह खुलता रहे. चांदी को रहने दीजिए, कोई बात नहीं. Let the white patches be there. Just make sure that you are visiting your doctor regularly and getting it checked out. अगर white patch आ रखा है, जलन नहीं है और मुंह अच्छे से खुल रहा है, तो OSMF आपका लगभग लक्षण अनुसार ठीक हो गया है, which is all right. और उसके बाद एंजाइटी आपको नहीं करनी है. Yes, I have already answered this question. And what are the signs in your body? Any problem has come within months? This is a very vague question. I will not be able to answer this because I'm not understanding the context of your question. Make sure that you frame your question properly. Sir, I have a rash on the side of my teeth and on the side of my throat. Okay. Has this rash increased in size? Has the burning sensation increased in size about this rash? If you can explain or elaborate a little bit more what kind of rash it is it increased in size? Is the burning sensation increased in the rash? And have you shown to a dentist personally? That's also one of the questions that I would want to ask a lot of people. Why do you want to know if there's any problem coming in your body? Just normally be healthy. As simple as that. Why do you want to have anxiety for no reason? How to know if any problem is going to your body? It will show some sign. As simple as that. If it's not showing any sign, don't be worried about it. There's a lump on the side of my teeth and it has come out on the side of my throat. Please tell me the solution for it. I want you to drop me a message on WhatsApp 9008 417531. 9008 417531. And you can message me that you had talked to me live. Again, my number is 9008 417531. Any other questions, queries, doubts, apprehensions? Let me know if there is something that I can answer. And I think if I don't get, we've already almost crossed 40 minutes of the live. So if you have any questions, queries, doubts, apprehensions, you can ask them to me immediately right now. Otherwise, you can take my number down, 9008 417531. I have removed my teeth and developed cysts last from 1 year. Now it's come out and face is pushing over. Mohammed Arman, I've told you my number is 9008 417531. Drop me a message because it's not something that I can tell without having a look at the photograph. Yes, all of the people who are watching this live session, please try to message me on my number 9008 417531.
Let me see if I can try this. If my phone number can flash, make sure. Yeah, this is much better. This is my phone number. I have put the poll down. This is my phone number. You can drop me a message on this number. So I'll, if you are watching this on this live session, this phone number, please make sure when you're messaging me that you can tell me while you're sending me the message on WhatsApp that I have seen your live video and I've come from there only. So it's absolutely necessary that you can DM me. Yes, the person with the cyst also I would request you to message me on my number that is being flashed right now. This is my phone number. Any other queries, doubts, apprehensions? I think we are kind of good to go. And yes, I have put my number down. Please message me on the number. So with this, I would also like to take the leave from this live session. And my number is flashing. So please message me on WhatsApp and I'll be able to answer queries there. Please make sure you do subscribe to our videos and ring the bell for updates. And with God's grace, we'll still keep on posting more videos for you. Thank you.